Good morning, everyone, and welcome to my class, geography class. That is today. My topic is minerals and resources. I am Sudhanya Gupta. Let's start the topic. So first, we need to know what is mineral. Mineral is defined as a homogeneous natural occurring substance. It is the definable internal structure. So minerals क्या है? हम लोगों का जो धरती है, जो नेचर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उससे हम लोग जो कुछ ऑकरिंग जो हम लोग लेते हैं उसको हम मिनरल्स कह सकते हैं। जो हम लोगों के पर्पस में, जैसे कि ह्यूमन खुद के पर्पस में वो हम लोगों के लिए वो यूज करते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियड फॉर्म्स इन नेचर। ये तो सही बात है। डिफरेंट फॉर्म में मिनरल्स मिलता है। दैट इज द रॉक्स आर कंबाइंड विद द मिनरल्स। उसके बाद पहले हम लोग जो मिनरल्स उठाते हैं, जैसे कि डायमंड। डायमंड बहुत ही ग्लैमरस और ग्लोरियस एक चीज है जो हम लोग, लेकिन हम लोग जब वो नेचर से जब लेते हैं तो इतना ग्लोरियस नहीं रहता। उसके बाद उसका पॉलिशिंग होता है, उसके बाद जो उसका जो ग्लैमर है, जो मतलब जो ग्लैमरस जो लुक है वो निकल के आता है। मोड ऑफ ऑकरिंग मिनरल्स। सो इन द इग्नियस जो रॉक्स है, रॉक के ऊपर हमने पहले भी क्लास किया है। इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सब जो रॉक्स है इसके अंदर ही कोल मिनरल्स से ये सब रहता है। सेडिमेंटरी रॉक्स, नंबर ऑफ द मिनरल्स ऑकरिंग इन द बेड्स और लेयर। दैट इज द डिकम्पोजिशन भी होता है ऑफ द सरफेस में, रॉक्स डिकम्पोज्ड हो जाता है। मिनरल्स इज ऑल्सो occur in alveoli deposit of the sand valley floors on the base of the hills। हिल के बेस जो पहाड़ रहता है हम लोगों के देश में, मैं हम लोगों के इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बोल रही हूँ। जो पहाड़ है, जो हिल्स है, उसके बेस जो होता है, बेस में जो है वहां पर मिनरल्स भी रहता है। ओशन में भी मिनरल्स रहता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मिनरल्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाए? मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जेटिक। मेटेलिक को हम लोग थ्री पार्ट्स में वी कैन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दैट इज द फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीसियस। फेरस का जो एग्जांपल्स है वो क्या है? मैंगनीज, आयरन ओर, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नॉन फेरस का जो एग्जाम्पल्स है दैट इज कॉपर, लेड, बॉक्साइड एक्सेट्रा। एंड प्रीसियस जो है, जो बहुत ही प्रीसियस थिंग्स जैसे कि हम लोग बोलते हैं, दैट इज द गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एक्सेट्रा। सो नॉन मेटेलिक का जो पार्ट है इसमें हम लोग कह सकते हैं माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट एक्सेट्रा, इसका जो एग्जाम्पल्स है। और एनर्जी मिनरल्स क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है। सो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स है ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है। सो यही है बेसिक जो क्लासिफिकेशन है। आप अगर चाहे तो नेट से हम आप लोग देख सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग फेरस मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। दैट इज क्या है? आयरन एंड ओर। आयरन ओर इंडिया में दैट इज द मैग्नेटाइट 70% एंड हेमाटाइट 50 to 60% हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो इसके बारे में इंडिया इज एंड आउट द फेयरली अबंडेंट ऑफ द रिसोर्स ऑफ द आयरन ओर। द मेजर आयरन बेल्ट कहाँ कहाँ पर है ये हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को जो बात है वो, ये जो क्वेश्चंस है ये आ सकता है। दैट इज द ओडिशा झारखंड बेल्ट, द दुर्ग बस्तार चंद्रपुर बेल्ट, दैट इज द बल्लारी चित्रदुर्ग बेल्ट एंड द महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। सो ये है मेन जो है ये आयरन ओर का जो बेल्ट है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। दैट इज द मैंगनीज। मैंगनीज जो है इट इज द मेनली यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग स्टील। स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंगनीज यूज होता है। नियरली 10 kgs ऑफ मैंगनीज रिक्वायर्स टू द मैन्युफैक्चर 1 ton स्टील। ये जो है ये
नेसेसरी है जानने के लिए, जैसे कि 10 kg मैंगनीज, ये एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है। 10 kgs of manganese is required for the manufacturing 1 ton of steel. It is also used for the manufacturing bleaching powder, that is the paints, मैंगनीज यूज होता है। इसके बाद जो आता है दैट इज द नॉन फेरस मेटल इज कॉपर। कॉपर में क्या है, गुड कंडक्टर टू हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड द केमिकल्स इंडस्ट्री। द बेलेघाट माइंस इन द मध्य प्रदेश, that is the Khetri mines in Rajasthan and Shinghum district in Jharkhand are the leading procedures of the copper. So the bauxite क्या है? Bauxite deposit are formed by the decomposition of the wide variety of the rocks in aluminium, that is the silicates. So bauxite कहाँ पर हम लोग डिकम्पोज होता है, ये हम लोग जानेंगे। So aluminium is obtained from the bauxite. Aluminium is a very good conductivity, has very good conductivity and the great malleability. So deposits of the many found in the अमरकंटक प्लेटू में हम लोग बॉक्साइट हम लोग को देखने को मिलेगा। इसके बाद है द बिलासपुर कांति जो बेल्ट है, उसमें भी हम लोगों को बॉक्साइट दिखने को मिलेगा। सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? माइका। माइका क्या, इट कैन बी द क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, डिफरेंट कलर में माइका मिलता है। माइका इज द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। माइका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिनरल्स है। सो इट इज द एक्सलेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो पावर लॉस फैक्टर, दैट इज ये जो है हाई वोल्टेज जो होता है माइका, वो रेजिस्ट करता है। Mica deposits are the found of the northern edge of the छोटोनागपुर प्लेटू। ये छोटोनागपुर प्लेटू में हम लोगों को देखने को मिलेगा। Rocks minerals, limestone is found in rocks composed of the calcium carbonates and the calcium and magnesium carbonates. It is the basic raw material for the cement industry and essential for the smelting iron and ore in the blast furnace. So conservation of the mineral का conservation, non-renewable products जो resources जो है, it takes thousand years for the formation. ये जो minerals है 1000 years लगता है सिर्फ formation होने के लिए ही। Continued extraction of the ores leads to the depletion of the minerals. So it is important to take necessary step to the mineral resource and it is used to the planned and the sustainable manner. So energy resources क्या क्या है? That is the conventional resource में, that is the cattle dung, cake, coal, petroleum, natural gas, ये सब जो है ये conventional sources है। And non-conventional sources जो है, that is the solar, wind, tidal, that is the geothermal, biogas, atomic energy, ये सब जो है ये non-conventional sources है। Conventional sources of the energy, that is coal. It is the most abundant available fossil fuel. ये हम जानते हैं। It is used for the power generation. कोल का जो use है वो यहाँ पर point wise हम लोग देखेंगे। Power generation में use होता है that is the lignite of the lower grade brown coal. It is a soft and a high moisture content. Coal has been the buried deep in and the subjected increased temperature to the bituminous coal. So anthracite है, bituminous, lignite and peat. ये जो कोल है तो ये कोल का भी four types. We can see the coal is divided into 4 types. That is anthracite, bituminous, lignite and peat. ये कहाँ पर मिलता है? झरिया,
Raniganj, Bokaro are the important field. इसके बाद जो आता है दैट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इट इज द नोडल इंडस्ट्री. ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव एक इंडस्ट्री है. ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. मुंबई, हाई, गुजरात, आसाम एंड मेजर पेट्रोल आर द मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरिया. Natural gas is the important to the clean energy resource. It is considered as the environmental friendly fuel. So, ये जो power and fertilizer industries and the key use of the natural gas जो होता है, that is the compressed natural gas CNG is used to the vehicles for the replaced liquid fuels. So, the large reservoirs of the natural gas has been discovered in the Krishna Godavari basin. Electricity by running water which drives hydro turbines and they generate hydroelectricity. It is renewable resources of the energy. India has the number of the multi-purpose of the project like the Bhakra Nangal, Damodar Valley Corporation, एक्सेट्रा. जो इलेक्ट्रिसिटी जहां पर होता जहां से जो प्रोड्यूस होता है बाय बर्निंग ऑफ द अदर fuels such as the coal, petroleum and the natural gas drive turbines to product the thermal power. It is used that is the non-renewable fossil fuel for the generating electricity. So non-conventional sources जो है non-conventional sources of energy, that is the nuclear energy obtained by the alternating the structure of atom uranium thorium, इससे हम लोग generate होता है. That is the solar energy is the produce of the sunlight, that is the provocally, that is the technology converts sunlight directly into electricity. Wind energy of the power is used to the wind to generate electricity. Wind turbines are the used for the purpose of the largest wind farm cluster in located in Tamil Nadu and Tamil Nadu from the that is the Nagarkoli coil to Madurai. So कहाँ कहाँ पर मिलता है ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है. बायोगैस टाइप ऑफ द बायोफ्यूल. बायोगैस का जो टाइप है, बायोगैस इज द मोस्ट एफिशिएंट यूज फॉर द कैटल डंग. दैट इज द tidal energy is the form of the hydro power converts to the energy. जो टाइड एनर्जी होता है फ्रॉम हाइड्रो पावर, दैट इज द कन्वर्ट्स, इससे एनर्जी में कन्वर्ट्स होता है. दैट इज द गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ and in Gujarat of the western coast are the general that is the Gangetic Delta. In Sundarban region of West Bengal is the provide that is the ideal condition to the utilizing that is the tidal energy. When the heat and the electricity are the produced using in the interior of the earth, it is known as the geothermal energy. So the in India, geothermal energy is harnessed for that is the Parvati Valley near the Minakarn in Himachal Pradesh from the Paga Valley in Ladakh. सो कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज कैसे होता है, ये जो 4 पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है. दैट इज द यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल व्हीकल्स. दैट इज द स्विचिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू आर यूजिंग नॉट यूजिंग टू यूजिंग पावर सेविंग दैट इज द डिवाइस एंड यूजिंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.